जय भीम, जय संविधान भैया, विजय भैया जी। लाइक हो गया? हाँ भैया, थैंक यू, लाइक हो गया। स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हो? जय भीम, जय संविधान भैया, विजय भैया जी। कैसे हो भैया जी? थैंक यू विजय भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। नीला सलाम दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय भाई। स्वागत है भारती भाई, कैसे हो आप? खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका दीदी? खाना पीना हो गया भाई, जुकाम हो रहा लग रहा है। बोलो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपका हुआ खाना पीना? मुझे भी पता था आपका हुआ। मैं ठीक हूँ। ओके भाई, ठीक ही रहना चाहिए। गले में खराश हो रही है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम दीदी। आपको भी भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। नीला सलाम। आपका तबीयत कैसा है दीदी? ठीक है भाई, बाकी तबीयत सब ठीक है। जुकाम सा लग रहा है, गला लग खराश हो रही है। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? मेरा खाना हो गया है। आप बताओ, आपका हुआ? और मेरा खाना पीना हो गया है दीदी। अच्छा भाई, थैंक यू। सबको हो रहा है जुकाम बुखार खांसी। क्या? एक कहाँ है? आपके पास तो दो है ना। तो उधर एक और होगी, देखना इसके नीचे। चाहे आकाश, आकाश वाले देखना, वहां जाके वहां। कह तो रही हूँ, ये इसके अंदर फंसा, को कुछ देखे नहीं रहा। पगली कहाँ चली गई? दूसरी आईडी से जाओ, आओ। अंजू सिस्टर कहाँ है भाई, बताओ मुझे। इस पे मत रखो, नीचे रख लो, आंखों में पड़ जाएगा बेटा। नीचे रखो, नीचे रखो, फिर उसी कंबल पे। दीदी मैं अब बहुत बच कर रहता हूँ बहनों से। क्यों भाई, क्या हुआ बताओ? बहनें क्या कर रही हैं, आपको बचना पड़ रहा है? थैंक यू सो मच। बहनें ऐसा क्या कर रही हैं भाई? क्योंकि जो बहन बर्तन और कपड़ा धो सकती है वो मुझे भी धो सकती हैं। अच्छा भाई, बेटा तुरंत पकड़ लेगा। नीचे रखो, तो नीचे मैट रख के वही सेक लो आराम से बैठ के। सो जाओ। जब तक ठीक था ना तब तक खूब दौड़े हो। भाई कितनी आईडी चलाते हो? मैं तो अभी अभी आई हूँ दीदी। जय भीम, नमो बुद्धा सिस्टर, स्वागत है आपका। कैसी हो आप? एक ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। नीला सलाम दीदी। जय भीम सिस्टर, जय भीम, स्वागत है। कैसी हो आप? कहाँ रह रही हो इस टाइम? दिख नहीं रही हो।
सबसे पहले लाइव में पगली एंट्री लिया था दीदी। अच्छा भाई, मैं सोची आप हो। नहीं दीदी। कैसी हो सिस्टर बताओ, कैसी हो आप? आकाश, पानी एक बोतल यहाँ रख लेना, मुझे बहुत प्यास लग रही है बार बार, पता नहीं क्यों गला सूखा जा रहा है। मेरा भी जुकाम से ऐसा होता है। मम्मी एक बोतल रख लेना है, वहाँ पे साइड में रख लो। मम्मी से ही पहले भाई एंट्री मारे थे। अच्छा सिस्टर, भाई भी हंस रहे हैं। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है दीदी। अच्छा सिस्टर, कौवा नहीं, अब मैं कुकुर बोलूंगा। किसको? किसको बोलोगे? मैं ठीक हूँ दीदी। ओके सिस्टर, ठीक ही रहना चाहिए। बहन, मेरा तो कोई वो पता नहीं चलता, मैं कब ठीक हूँ कब बीमार पड़ जाती, कुछ समझे में नहीं आता। अच्छा, पागल भाई। पागल भाई को कभी बोलना नहीं सिस्टर। पागल भाई नहीं, भाई बहुत अच्छे हैं। ऐसे भाई कहाँ से मिले बताओ। पागल भाई को कभी इग्नोर नहीं करना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर। मैं बहुत याद कर रहा था दीदी। किसको याद कर रहे थे? मुझे याद कर रहे थे भाई। आपको क्या लगता है बहन? बहन, आपको क्या लगता है? मैं बहुत बार याद किया था दीदी पगली को, मुझे पता है भाई, लेकिन मुझे एक भी बार नहीं याद करती है। ऐसा ना किया करो सिस्टर। बेटा, हीटर के पास ज्यादा नहीं बैठते आकाश, पता क्या दिक्कत होती है उससे? मम्मी देखो, हीटर पे पानी नहीं फेंक रही है। छोटे। सॉरी दीदी। किस बात का सॉरी बहन? सॉरी काहे बोल रही हो? सॉरी किस बात का? किस बात का सॉरी बहन? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बिल्कुल बहन, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय सिस्टर, नमो बुद्धाय। गलन सी हो रही है आज ना। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, फायदा मत उठाओ। कोई बात नहीं है सिस्टर। अच्छा, मुझे सिखा रही हो। मैं क्या ही बोलूं दीदी। हीटर के पास ज्यादा बैठने से ब्लड ज्यादा खींचता है दीदी, ये तो मुझे पता, इसीलिए तो मना कर रही हूँ। इसीलिए मना कर रही हूँ, बच्चे नहीं मानते हैं, हाथ पैर धो के आते थे तुरंत वहीं, और वैसे भी जब तक खाना पीना खाएंगे उसी के पास बैठे रहेंगे हमेशा, इसलिए दिक्कत होती है बाद में।
जल्दी लगाना है। इस दुनिया में अपने होने का सभी लोग दावा करते हैं, लेकिन असल में अपना कौन होता है ये वक्त बताता है। बिल्कुल राइट भाई, बात तो आपकी बिल्कुल जायज है। सही बात है। जब दवाई बोले चलो तो नहीं गई ना। आप छोटे बच्चे हो क्या भाई? और का सिस्टर, भाई तो अभी छोटे ही है ना। जो मुझे समझो पूजा बहन, और जैसा मुझे समझो। मैं कहीं किसी का सिफारिश नहीं करता हूँ पूजा बहन, यही कारण मेरा अंदाज जायज लोग को पसंद नहीं आता। भारती भाई, मैं एक बात बोलूं? बोलो आप लोग तो बोलो। बिल्कुल कोई वैसी बात नहीं है। मैंने आज डॉक्टर से बहुत ज्यादा डांट खाई है। कह तो रही हूँ, मैंने आज डॉक्टर से बहुत डांट खाई है भाई। अच्छा, क्या रिपोर्ट आया? रिपोर्ट किसी चीज का नहीं भाई, वो तो मुझे दवा लेने जाना था, मेरी दवा खत्म हो गई थी ना, और चेकअप कराना था। मुझे डांटा इसलिए मैं चश्मे नहीं लगा रही हूँ। अब मुझे लाइव वेब पे बैठती हूँ, बहुत लाज लगती है, सोचती हूँ लोग क्या बोलेंगे चश्मा लगा के। मैं नहीं लगाती हूँ भाई, इसीलिए आंखों की दर्द हो रही ना, सूज जाता है। मैं सोचती हूँ चश्मे लगाऊंगी लोग क्या बोलेंगे, इसलिए नहीं लगाती हूँ। बोल रहा था बिना मतलब लगाए ऐसे नहीं करना, नहीं तो नंबर और बढ़ जाएगा। ठीक है पूजा बहन, ऐसा बात नहीं है दीदी, सच में भाई, इसके लिए मैं ज़्यादा डांट खाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ भाई, मैं भूल गया था दीदी, इसके लिए सॉरी दीदी। किस बात का भाई? सच्ची बताओ, लगाना चाहिए या नहीं? सब लोग नहीं समझते भाई ना, सब लोग सोचेंगे फैशन में लगाई है, इसलिए नहीं लगाती हूँ। और सर भी कम दर्द देगा, हाँ इसीलिए डांट रहा था। कह रहा है चश्मा रखने के लिए थोड़ी बना, उसको लगाने के लिए। हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं लगाती है।
इसलिए मैं बोलूँगा कि आप चश्मा ज़रूर लगाएं। मुझे मैं कितने दिन से बना भाई, मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे अजीब-सा लगता है। मैं बाहर जाती तो भी नहीं लगाती, घर में भी ऐसे नहीं। हाँ भाई नहीं मैं चश्मा मैं हीटर बंद करके रजाई में जाओ, उसको जितना बैठो बैठना अच्छा लगता है बेटा, नुकसान करता है उसको निकाल दो, प्लग निकाल दो उसका। हीटर के पास बहुत कम ही बैठा करो, रजाई में बल्कि चले जाओ, कैप लगा लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा सर दर्द का कारण यही था दीदी कि मैं बहुत देर तक फोन चलाता हूँ। बिल्कुल भाई, ये भी होता है, सही बात है, फोन चलाने से भी ऐसी दिक्कत होती है। मेरे फोन से भी हो जाती है फिर तो वो परेशानी, वो तो है ही है। और जब चश्मा वश्मा लगा ना करो ना तो और दर्द होता है। और मैं जितने समय तक किसी के लाइव में रहता हूँ उतना समय में कमेंट करते रहता हूँ। ज्यादातर तो आप मेरे ही लाइव में रहते हो, मैं तो और किसी के लाइव में ज्यादा आपको नहीं देखती हूँ। और मैं जितने समय तक किसी के लाइव में रहता हूँ उतना कमेंट में करते रहता हूँ, इसलिए मैं अब फोन चलाना कम कर दी हूँ दीदी। फोन चलाना कम कहाँ, आपका फोन चलाना कम हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपका फोन चलाना कम हुआ है। आपको लगेगा भी नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई कि आप फोन चलाना कम किए हो। पढ़ाई पढ़ाई से ज्यादा तो फोन चलाते हो, सभी बहनों का सपोर्ट करते हो, सबसे ज्यादा तो हमारा ही करते हो, तो देखती नहीं हूँ। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि जब तक मैं बात नहीं कर लेता हूँ, तब तक मुझे मन ही नहीं लगता। सच में भाई, अपनापन होता है सच्ची, जिसको मान लो ना, जब तक ना जाओ बात ना करो तब तक जैसे कि अच्छा नहीं लगता, कुछ खोया खोया सा लगता है। बात सही है, यही एक अपनापन होता है। अब देखना दीदी, मैं कितना समय के लिए लाइव में आऊंगा। कोई बात नहीं है भाई, आप थोड़े समय के लिए आओगे तो भी पर आना जरूर, भूलना नहीं। भूलना नहीं, बस यही है। अगर 2 ही मिनट के लिए, 5 ही मिनट के लिए आओगे, लेकिन आना जरूर। अंजू बहन सो गई क्या आप? मैं आपके पास इतना समय बिताया हूँ दीदी, यदि मैं जल्दी चल जाऊंगा तो आपको ही खराब लगेगा और मुझे भी। नहीं भाई, खराब नहीं लगेगा सच में। आप बस आ जाओ, हालचाल मिल जाती है ना, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर भी सुकून मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो दीदी को कोई एतराज नहीं है भाई कि आपने इतना समय नहीं दिया, आप ऐसा क्यों बोलते हो दीदी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सच में भारती भाई, कभी दिल्ली एक बार आना ना तो जरूर मुझे बताना, आना जरूर।
ऐसा नहीं है, जब भी कभी भी आना, जरूर बताना। आपको यदि लगता है कि मैं भूल जाऊंगा तो ये आपका गलत सोच है दीदी। मुझे यकीन है भाई आप नहीं भूलोगे, ये तो मुझे पता है पक्का, 100%। मुझे इतना पता है कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। भूलोगे तो भी हम भूलने नहीं देंगे ना। खांसी का सिरप है ना, थोड़ा सा पी लो ना। दवाई नहीं खाती भाई, खांसती रहेगी। जब तक मुझे आप नहीं ना भूलेंगी मैं, तब तक मैं नहीं भूलूंगा। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता भाई कि मैं भूल जाऊं भाइयों को, ऐसा कभी नहीं है। मैं जिसको मानी हूँ दिल से ना, उसको निभाऊंगी जब तक जिंदी रहूंगी। आप लोगों की शादी हो जाए, शायद कुछ दूरियां बन जा, बट ऐसा नहीं है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा। किसकी शादी हो रही है? भारती भाई की। जाओगे? हाँ, मुझे भी लेके चलना, रसगुल्ला खाऊंगा। आपका भांजा क्या कह रहा है, जब भारती मामा की शादी होगी तो मुझको ले चलना, मैं रसगुल्ले खाने जाऊंगा। रसगुल्ले खाने मामा के यहाँ आ जाएगा शादी में। हम्म। हाँ, क्यों नहीं? तू सबसे पहले जाइए, तब तक तू थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं। अकेले भी जा सकता है ना। कहाँ है घर? हम्म? घर है कहाँ? पटना बिहार, जहाँ के खान सर जी हैं। मैं किसी से रिश्ता जोड़ते हैं फायदे और नुकसान देखकर नहीं दीदी, इसलिए मैं किसी से रिश्ता दिल से जोड़ता हूँ दीदी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट। फायदा नुकसान देख के थोड़ी रिश्ता होता है भाई। जहाँ अपनापन होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे को लोग समझते हैं, रिश्ते का रिस्पेक्ट होता है, वो स्वार्थ देख के वहां नहीं करते हैं फायदे और नुकसान को। और मैं मतलबी को दिमाग से रिश्ता जोड़ते हैं और समय आने पर साइड भी हो जाता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही में आज के टाइम में दुनिया सच में मतलबी है ही है। बहुत लोग ऐसे हैं। एक शायरी सुनाता हूँ दीदी। अरे भैया सुनाओ। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय वीर भैया जी, स्वागत है आपका लाइव में। और सॉरी चाहूँगी, आपने सुबह जब कमेंट किया था मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी आपके कमेंट का, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, गई थी, आज मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी तो मैं गई थी, इसलिए मैं म्यूट करके रखी थी, किसी का जवाब नहीं दी थी, इसके लिए सॉरी चाहूँगी। और बताइए खाना पीना हुआ वीर जी आपका? एक शायरी सुनाता हूँ दीदी, बिल्कुल सुनाओ भारती भाई। वीर भैया जी बताओ, खाना पीना हुआ आपका, कैसे हो आप? सुनाओ भैया। चले गए क्या वीर भैया जी? खाना हो गया सिस्टर मेरा, ओके भैया थैंक्स। अच्छी बात है, खाना हो गया। आप तो, आपका तो 7:30 ही 7 बजे तक हो जाता है। और बताओ भाभी कैसे हैं, प्रथम वीर कैसे हैं? सुनाओ भारती भाई। यदि रिश्ते की सिलाई भावनाओं से हुई है तो कभी टूटेगा नहीं, और रिश्ते की सिलाई यदि स्वार्थ से हुई है तो कभी टिकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल बिल्कुल। नोक झोंक तो थोड़ा बहुत होता रहता है भाई, जहाँ इंसान नहीं कहता एक बर्तन जहाँ है बर्तन तो वहाँ खटकेंगे ही। थोड़ा बहुत हो जाता है लाइफ में, इसका मतलब नहीं कि रिश्ते खत्म ही कर दूं। जब रिश्ते जहाँ खत्म कर दो वहाँ फिर अपनापन क्या है, कुछ भी नहीं है। आज वैसे कॉलेज थी मेरी आपसे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल थी वीर भैया जी, मैंने आपसे बोला भी था क्योंकि मैं सोची थी करने के लिए। मैं 11:30 बजे, मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी, दोपहर तक की थी, मैं फिर 11:30 बजे या 11 बजे के करीब, शायद 11 ही बजे घर से निकल गई थी। मैं आई 3 बजे फिर। थैंक यू सो मच। फिर दोबारा आप दिखे भी नहीं,
आपने धोखा किया है सिस्टर। आपको ऐसा लग रहा है वीर भैया जी हम धोखा कर सकते हैं? कुछ दिन और परेशानी है भैया। आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हो, एक तरफ कह रहे हो धोखा दिया। धोखा नहीं देती भैया, धोखा नहीं वीर भैया जी, सच में गई थी मैं। 11 बजे मेरा उस टाइम लाइव चल रहा था, तभी मैं चली गई। मजाक कर रहा हूँ सिस्टर, मुझे पता है। कल करो वीर भैया जी, कल तो 26 जनवरी है यहाँ, वैसे भी सब लोग इधर उधर। मैं गलत हूँ दीदी? अरे मेरे भैया, किसने कहा? किसने कहा भारती भाई आप गलत हो? बताओ किसने कहा? मुझे रोदू लड़की ने बता दिया था कि मम्मी हॉस्पिटल गई है। रोदू ने बता दिया था? कब बताई थी? इसलिए मेरे साथ ही गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं भारती भाई, ऐसा कुछ नहीं है। रोदू ने आपसे कब बताया था भैया, वीर भैया जी? अच्छा, कमेंट करी होंगी ये लोग, फिर इनके पास एक फोन था जब कमेंट किया था। अच्छा अच्छा भैया, एक फोन यही था, एक तो मेरे साथ था। और मैं धोखेबाज भी हूँ दीदी, मेरे से बचकर रहना दीदी। ऐसी कोई बात नहीं है भारती भाई, मैं तो ये नहीं कह सकती आप धोखेबाज हो। मैं आस्तीन का सांप हूँ। नहीं नहीं भारती भाई, अपने मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। दीदी कभी बोलेगी तो बोलना कि बोल रही हो। रोदू लड़की ने मैसेज कर दिया था। अच्छा, ये लोगों को इतना पता हो गया वीर भैया जी। आप लोग आते हैं ना, तो इनको सबको पता है कि ये मामा है। हाँ, आपको भी, भारती भाई को, रवि भैया को, सोनू भैया को, सबको जानती है कि मामा ये लोग हैं। एक दिन बोल रही थी मम्मी, जब मामा इतने हैं तो बुलाते क्यों नहीं, उनके घर काहे नहीं जाती हूँ। उनके घर काहे नहीं जाती फिर लेके हम लोगों को। मैंने कहा अच्छा, सिर्फ मुझे नहीं जानती है। आपको नहीं जानती है? पिक्चर दिखाऊं क्या आपकी? पिक्चर दिखाऊं? आपकी डीपी से स्क्रीनशॉट लेके उसके साथ कैसा कैसा पिक्चर बनाई है। थैंक यू थैंक यू। अबीर भैया जी की फोटो देख के हंसती हैं। मम्मी ऐसे मामा हैं? ऐसे तो बोल। बीर भैया जी जानते हो आपको क्या बोली मेरी बेटी? मम्मी ऐसे तो भूत होते हैं दाढ़ी वाड़ी रख के। मैंने कहा नहीं बेटा, वहां पे सब लोग ऐसे रखते हैं। सबका हंसी उड़ाती है। मेरे भांजे का नाम ले दो एक बार, अभिनूर सिंह बोल दो, मेरे साथ है भांजा। अभिनूर, अच्छा आपके भांजे आपके साथ हैं। कैसे हो अभिनूर बाबू, ठीक हो? बोलो, कैसे हो बाबू? थैंक यू भैया, थैंक यू। अभिनूर बाबू कैसे हो? खाना पीना हुआ आपका? चीजी मिली खाने को कि नहीं? अभिनूर सिंह बोल रहा है, ठीक हूँ सिस्टर। अच्छा भैया, बड़े हैं काफी क्या? थैंक यू सो मच। किधर चले भारती भाई, कहाँ चले गए? छोटा सिस्टर 11 साल का है।
अच्छा भैया, खाना पीना हुआ बाबू कुछ? क्या क्या खाए? किधर चले भारती भाई? आज मेरे साथ सो रहा है। बच्चे हैं भैया, जिससे प्यार करते हैं ना, एक लगाव रखते हैं, यही होता है एक बचपना। लाइव देख रहा है साथ में, अच्छा भैया। अच्छा, साथ में लाइव देख रहे हैं। खूब परेशान करना बाबू, जब तक चीज ही ना मिले खाने के लिए, जब तक चीज ही ना मिले ना, परेशान करना। साधना सिस्टर से कलीब था आज। कब था वीर भैया जी? मैं नहीं देख पाई, सॉरी, सच बता रही हूँ, आज का नहीं देख पाई। देखते हैं कितने बजे लाइव अब। अच्छा दीदी अभी लाइव नहीं आई है, रात को क्लिप था। रात को कल था ना, आज नहीं ना। कल तो देखी थी आपका, भीम की बेटी वाले पे ना किए थे आप। जय भीम नमो बुद्धा नीला सलाम बहन जी। जय भीम नमो बुद्धा नीला सलाम आपको भी अरविंद भैया, थैंक यू, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका बहन जी? मेरा खाना पीना आज हो गया भैया, आप बताओ आपका हुआ? मेरा खाना हो गया भैया, आप बताओ आपका हुआ? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया, भारती भाई बोल रहे हैं। मैं कब से चिल्ला रही थी, भारती भाई कहाँ चले, किधर हो? थैंक यू अरविंद भैया, थैंक यू। हम भी ठीक है, खाना खा लिया हूँ। अच्छा अरविंद भैया, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं? आप कैसे हैं अरविंद भैया? भारती भाई पूछ रहे हैं। 9 नंबर लाइक कर दिया है, थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका खाना पीना हो गया अरविंद भैया जी? भारती भाई पूछ रहे हैं। मैं आईडी चेंज करने चला गया था दीदी। अच्छा भाई, मैं सोची काहे चले गए, पर उनके यहाँ भागवत हो रहा है, भागवत, इसलिए वो आजकल लाइव टाइम पर नहीं आ पा रही हैं साधना सिस्टर। अच्छा भैया, दीदी क्या हो रहा है? आस पास में हो रहा है कि उनके घर पे हो रहा है? अरविंद पाजी जय भीम नमो बुद्धाय, वीर भैया जी बोल रहे हैं, अरविंद बड़े भैया जी उनके आसपास, वही तो कह रही हूँ, मैं भी वही सोचा भैया। लो पाजी जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम, कैसे हो आप? हम ठीक हैं भाई जी। ओके अरविंद भैया, 11 दिन चलेगा, 11 दिन चलेगा। मैं भी ठीक हूँ अरविंद भैया, भारती भाई बोल रहे हैं। सबका खाना पीना हुआ? तभी तो टाइम पर नहीं आती हैं सिस्टर। हाँ भैया, जब ऐसे होता है, शोर शराबा होता है ना, लाइव चलाया नहीं जा सकता, कैसे चलाए कोई, अच्छा नहीं लगता है। हाँ दीदी, ओके भाई, ओके, थैंक यू वीर भैया जी। वीर जी जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम, अरविंद भैया जी बोल रहे हैं। अरविंद भैया वीर भैया आपको पहले बोल दिए। कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका वीर जी? अरविंद भैया बोल रहे हैं, मैं तो आज अंडा कढ़ी चावल खाया हूँ दीदी। इतना पसंद है भाई? अरविंद पाजी जय भीम, जय संविधान, वीर भैया जी बोल रहे हैं।
आप लोग हमेशा अंडा, चावल, कढ़ी, मटन, चिकन, पता नहीं क्या क्या खाते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता। हाँ जी अरविंद पाजी, मेरा खाना हो गया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मुझे आप ये बताइए दीदी कि आपको क्या क्या पसंद है, आज मुझे आपसे जानना। मुझे क्या पसंद है, पहले दाल भी तो नहीं खाती थी, अब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। सिर्फ आलू, गोभी, मटर की सब्जी, या चना हो सूखा वाला, इसको भिगो कर वैसे सब्जी, मतलब यही सब खाती हूँ चटपटा। बाकी बाहरी वैसी कोई चीज नहीं। दूध, दही, घी, अंडा, मांस, मच्छी और पनीर, मशरूम, ये सब कुछ नहीं खाती। कद्दू, लौकी नहीं खाती। सब्जियों में बहुत सारी सब्जी जो नहीं खाती। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा कुछ नहीं खाती। सिर्फ एक चीज खाती हूँ, समोसा, और कभी मन करता तो जलेबी, बस। मेरी पसंद बहुत अलग है भाई। दीदी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ? कर लो भाई। कैसा भागवत कथा चल रहा है साधना बहन के यहाँ? साधना बहन की दीदी यहाँ नहीं भैया, उनके बगल में चल रहा होगा। अगर सिस्टर अभी सिस्टर से कलेब हुआ होता तो आज जुड़ना। वीर भैया जी मैं जुड़ी थी, मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा। मैंने कमेंट भी दीदी के वीडियो पे करी हूँ, आप जाके देख लेना। मैंने कितनी बार की हूँ कि दीदी मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा। आप खाती क्या हो दीदी, तो बताया तो भाई, मुझे ये बताइए। आलू, मटर, गोभी, टमाटर, बस यही सब्जी खाती हूँ। और दाल बहुत कम खाती हूँ। बाकी इसके अलावा और कोई सब्जी नहीं खाती। भिंडी, लौकी, कद्दू नहीं खाती। मैंने तो आज खीर पूड़ी खाया हूँ। अच्छा भैया, खीर पूड़ी तो हमको भी पसंद है अरविंद भैया, खीर पूड़ी खा लेती हूँ, सेवई नहीं खाती। सेवई नहीं खाती। बाकी खीर पूड़ी खा लेती हूँ, खीर पूड़ी, दलिया। शायद साधना सिस्टर से मेरी थोड़ी देर बाद कलेब होता। अच्छा भैया, मुझे नहीं पता था आपको आना है, बस। वीर भैया जी मुझे कमेंट पे वो दिला दो ना, ब्लू दिला दो। मैं ब्लू से थोड़ी कोई छेड़छाड़ करूंगी, मेरी बहन है, इससे मैं थोड़ी, मैं एक विश्वास होता है भैया, अपनापन होता है। मेरा कमेंट बिल्कुल नहीं शो हो रहा, मैं जाके कमेंट करके वीडियो पे चली जाती हूँ, लाइव देखती हूँ। जब तक बात नहीं करो अच्छा थोड़ी लगता है। दीदी मुझे आप अष्टांगिक मार्ग बताइए। अच्छा भाई, फिर मैं बताऊंगा। हाँ मैं समोसा बस। समोसा बस, सच में भैया, गांव में जाओ ना, समोसा और छोला और फुल्की खा लेती हूँ बाहर, बाकी वैसी बाहर की कोई चीज नहीं खाती। गोलगप्पे और छोले समोसा बस। फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी सिस्टर। वीर भैया जी बोल देना साधना दीदी की, मेरा जो एक ही गौतम वाली आरडी है उस पर ब्लॉक कर देंगी, मैं आऊंगी। मैंने कमेंट डाला, आप भी मैसेज कर देना उनको। हम तो सदाबहार हैं, जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ। हम नहीं खाते हैं भैया, शादी पार्टी में जाते तो भी ऐसे देखते रहते हैं कि हमारे मनपसंद की ना तो सब्जी दिख रही है ना तो चावल।
अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा बताया हुआ एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से मानव को दुख, लोभ, लालच से मुक्ति मिलता है। अच्छा भैया, एक सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक प्रयास, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई बताने के लिए। थैंक यू। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, जैसे गाजर का हलवा। हाँ, गाजर का हलवा मुझे भी पसंद है भैया। गाजर, मूंग का हलवा सब पसंद है। हलवा मीठा वैसा पसंद है मुझे भी, सिर्फ सेवई को छोड़कर सब खाती हूँ। इन सभी का मतलब बता दो दीदी शॉर्ट में? बताओ भाई, बिल्कुल बताओ भाई। बताओ भारती भाई। फर्स्ट सम्यक दृष्टि से बताता है कि कोई वस्तु हो या व्यक्ति, इसको देखने की नजरिया अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, थैंक्स। सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प ये बताता है कि कोई चीज़ों की करने के लिए और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट, राइट भाई। तीसरा है सम्यक वाणी। ये बताता है कि ऐसा वाणी बोलिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे और अपने वाणी से मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान, जय मूल निवासी वीर जी, दीदी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। स्वागत है वीर भैया जी, अभी आए थे चले गए। बोल रहे थे आज लाइव ज्वाइनिंग है, साधना दीदी के साथ जरूर आना। मैं कैसे जाऊं, जाती हूँ भैया, सुन सुन के चली आती हूँ, कमेंट तो शो होते नहीं है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है भैया, ठंड ज्यादा लग रही है मुझे। बढ़िया है रवि भैया, आप सुनाओ, आप कैसे हो? चौथा सम्यक कर्म ये बताता है कि ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे मानव जाति में पहचान के साथ साथ मानव जाति को लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल भारती भाई, बिल्कुल थैंक्स। मैं भी थोड़ा सा पार्टी लगी हुई है उसमें परेशान हूँ, और टाइम निकाल कर तो अभी आया हूँ मैं लाइन में। अच्छा भैया, कितना कष्ट उठाते हो आप लोग लाइव में आने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप अभी ड्यूटी में ही हो। पांचवा सम्यक है आजीविका, ये बताता है कि आप ऐसा व्यवसाय कीजिए जिससे मानव जाति को नुकसान पहुंचाने वाले सामग्री नहीं होना चाहिए, जैसे नशा वाला सामान, अस्त्र। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, एकदम परफेक्ट आप बता रहे हो। थैंक यू सो मच भैया, दिल से। हमको नहीं पता था भारती भाई। आज वीर जी का फोन आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँ। अच्छा रवि भैया, वीर भैया जी तो अभी थे लाइव में, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वीर भैया जी? छठा है सम्यक प्रयास, ये बताता है कि आप सही दीक्षा में हमेशा प्रयास कीजिए, और ये तब तक जारी रखिए जब तक आप मंजिल को प्राप्त ना कर लें। बिल्कुल भैया।
सातवां है सम्यक स्मृति। ये बताता है कि अपनी जिम्मेवारियों और हक अधिकार को प्राप्त प्रति हमेशा सजग रहें। बिल्कुल भैया बिल्कुल। कहाँ चले वीर भैया? आठवां सम्यक समाधि। आप ऐसी चीजों को ध्यान कीजिए जिससे आपके पूर्ण रूप से शांति मिले। थैंक यू भैया भारती भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सब बात अपनी तरफ से बताया हूँ दीदी, मैं किताबों भाषा से हटकर बताया हूँ। बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम करेक्ट बताए हो भाई। लेकिन अर्थ सेम टू सेम है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा भाई, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझाए हो। थैंक्स। शिक्षा ही सब कुछ भाई, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो कुछ भी नहीं है। मैं कल चर्चा करूंगा कि 26 जनवरी क्यों मनाते। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ऐसी ऐसी चीज होने चाहिए जिससे कुछ सीख भी मिले, जो देखे उसको भी, जो लाइव में है उसको भी। दीदी जी और आपने दवा खाया कि नहीं? भैया मैं बता रही हूँ रवि भैया, सच में मैंने दवा 7:30 या 8 बजे जब मैं लाइव चालू थी तभी मैंने खा लिया दवाई, क्योंकि दिक्कत हो रही थी। आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, आंखें लाल हुई थी ना, सूजी भी अभी भी है। हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे खूब डांटा, आज खूब डांटा कि चश्मे लगाने के लिए दिया है, उसको रखने के लिए नहीं। अब मुझे अजीब सा लगता है, सिर और दर्द होता है, इसलिए नहीं लगाती हूँ। आपका खाना पीना हुआ भाई? मैं नहीं तो कोई भगवान है, मैं नहीं तो कोई भगवान हूँ और ना ही तो मैं कोई अवतार हूँ, मैं तो आप लोग जैसा आज छोटा सा इंसान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। मेरा दीदी क्या भाई बताओ? अच्छा ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं दीदी। बाय बाय भाई रवि भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच।
गुड नाइट, हम रात्रि, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। खाना के लिए पूछ रही थी दीदी। खा लो भाई, खाना अभी बचा है सब कोई, मैं तो खा ही नहीं। एक रोटी खा के सिर्फ, चावल वावल मुझे खाना नहीं, हस्बैंड डांटे हैं नहीं खाना इतनी टाइम चावल, सब ऐसे रखा है। एक रोटी खाई और दवाई खाई, अब खाना भी खाने का मन नहीं हो रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दीदी। अच्छा भैया, आ जाओ फिर खाना खा लो। खाना खा लो भाई। आप लोगों की जब इच्छा हो तब आ सकते हो, ऐसी बात नहीं है भारती भाई। खाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जब हम लोग को लाइव को शरीफों का लाइव घोषित हो ही गया है तो शरीफ परिचय देना भी बिल्कुल भाई, बिल्कुल भारती भाई, बिल्कुल राइट। शरीफों नहीं, रहीस, रहीस लोग आते हैं। रहीस का मतलब क्या होता है भाई, बताना, मुझे खुद नहीं पता। अब मैं हमेशा कुछ ना कुछ सवाल करूंगा दीदी, और मैं उसको बताने का भी कोशिश करूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, इससे नॉलेज बढ़ती है भाई, होना भी चाहिए। जो लाइफ में छुछुरपना करते हैं उनसे लाख अच्छा कि कुछ शिक्षा प्राप्त करो, कुछ नॉलेज हो एक दूसरे को। टैग बहुत प्रयास के बाद मिलता है, लेकिन हम लोग का बिना मेहनत का मिल गया। अच्छा भैया, बिना मेहनत, बिना मेहनत का मिल गया ना।
मेरा फोन अब खराब हो गया है दीदी, बहुत ज्यादा हैंग करता है, पुराना हो गया भाई ना। एक बार दिखा लो, बन जाए तो अच्छा है। इसलिए मेरे से अब इतना गलती लिखा जाता है। कोई बात नहीं भाई, टाइपिंग में हो जाता है, जिसका अच्छा होता है उसका हो जाता है, आपका तो फिर टाइपिंग में हो जाता है भाई। मैं भी वैसे लिखती हूँ हिंदी बोल के ना, तो मेरे से बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैं नया फोन खरीदूं क्या दीदी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल खरीद लो। अगर बजट है तो खरीद लो, नहीं है तो उसी से काम चलाओ अभी। मेरे पास अभी 10,000 रुपया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फोन खरीदने से अच्छा है कि इसको मैं बचा के रखूं। आगे मुझे ही काम देगा। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल राइट। अगर बन जाए चलाने लायक है तो अच्छे से आप चलाओ, फिर बाद में देख लेना क्या होता। हम्म। और दिन भर कहाँ रह लो? ये पैसा सिर्फ मेरा है दीदी, मैं ऑनलाइन करके कमाया हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई का कुछ तो खर्चा निकाल लेते हो ना अपने से, और क्या चाहिए भाई? पढ़ते भी हो, अपना कुछ खर्चा भी निकाल लेते हो। मेरे ना अजीब अजीब से ऐसा होता है खाना खाने के बाद, ऐसा लगता है कितनी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण होता है, कभी कभी हैंग करता है। अच्छा भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण करता है। अभी अच्छा चलता है दीदी। अच्छा भाई, तभी तो कह रहे हूँ एक बार डिस्प्ले चेंज करवा दो या दिखा दो उसको क्या प्रॉब्लम है। ये कॉलेज से कोर्स पूरा होने के बाद मैं रहूँगा और वहाँ पार्टनरशिप में यूट्यूब चलूँगा। अच्छा, पार्टनरशिप में यूट्यूब चलाओ। क्या? इससे मुझे भी रिवाइज हो जाएगा और पैसा भी अच्छा कमाई हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक्स, आपकी सोच अच्छी है। ट्यूशन बोल रहा हूँ दीदी। कराओ भाई ट्यूशन ही, कुछ भी थोड़ा बहुत तो निकलेगा। एक मिनट भारती भाई, मैं जरा दवाई एक रह गई है उसको खा लूं। नींद आ रही है ना, सो जाऊंगी ना तो फिर खा भी नहीं पाऊंगी।
यानी पढ़ना, पढ़ाना कि पढ़ना, ट्यूशन पढ़ाना होता है ना भाई। 1 मिनट भारती भाई, जाना नहीं, दवाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, थैंक्स। आप ऐसे मेहनत करो अपने लाइफ में, और बच्चों की भी भविष्य जो है आपसे पढ़े लिखेंगे उनकी भी बेहतर होगी मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा काम करोगे। जो टाइम यूट्यूब पे हम लोगों को हेल्प करने में करते हो ना, वो थोड़ा सा अपने लिए उतना निकालो। बच्चों के भी भविष्य सही होंगे, साथ साथ आपको भी रिवाइज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, करना चाहिए सच में। अभी भी आवाज नहीं जा रहा? क्या हो गया?
मैं कुछ नहीं, दिन में कहाँ कहाँ दौड़ी हो। छत से जीना, जीने से छत, फिर आप बोलोगी दीदी कि भाई मुझे भूल गए। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, अच्छे काम के लिए कभी नहीं दीदी बोलेगी। भविष्य का सवाल है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सुनोगे भाई, आप करो तो। ऐसा कभी नहीं बोलूंगी भाई। मुझे बहुत लोग सोचते हैं कि बेकार का इंसान है। अच्छे लोगों की कभी कदर नहीं होती है भाई, भारती भाई, अच्छे लोगों को लोग समझ नहीं पाते, समझे। अच्छे लोगों की कभी कदर नहीं होती है। किचन वाला पंखा चल रहा है क्या, लग रहा है ना ऐसा। हाँ? देखना छोटू, गलती से मैंने उसको तो नहीं चालू कर दिया। मोबाइल लेके जाओ। हम्म। हम्म। कहीं मैंने बंद किया लाइट, कहीं उसको तो नहीं चालू कर दिया। अरे नहीं बेटा, दरवाजा खोलो, हम यही हैं सब जगह, दरवाजा खोलो। अच्छा बच्चा तो हिम्मती है। मुझे बहुत लोग सोचते हैं कि बेकार का इंसान है। नीचे मोटर चल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। सोचने वालों का क्या है भाई, बताओ। ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में केवल आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके बारे में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, दूसरे लोग अंदाजा ही लगा सकते हो, चाहे कोई भी किसी के बारे में। अब इतनी टाइम कू कू कर रही हो, जो चीज मनो करो वही उल्टे करती हो, फिर कू कू। क्या कर रही हो भांजी, जुकाम जकड़ लिया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कू कू कर रही है। शाम को तो अमरूद खाई है। आज क्या क्या खाई थी भांजी, सब्जी रोटी दाल चावल यही खाई है। शाम को अमरूद खाई है, मूंगफली खाई है, जो चीज मना करूँ वो भी खाएगी। कुरकुरे मुरमुरे की तो बात ही नहीं। आदि को रस चूसने के लिए बोलो दीदी, अदरक का ना। नहीं खाती पीती है, मुंह बनाती है भाई, मार पीट के तो दवा खिलाना पड़ता है इसको, मार मार के जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, खाती नहीं है। छोटी अपना खा जाती है, ये कहेगी मुझे पीस करके दवाई दो। जय भीम अनमोल भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो भैया, तुरंत फायदा करेगा। हाँ भाई, कैसे हो जी दीदी, मैं ठीक हूँ भाई बिल्कुल, आप बताओ आप कैसे हो, आप कैसे हो रनित भाई। बाप का तबीयत, अच्छा आपका तबीयत, मेरी तबीयत ठीक है भाई, आप बताओ। बढ़िया दीदी, ओके भाई, बढ़िया रहना चाहिए रनित भाई। खाना पीना हुआ। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। खाना पीना हुआ रनित भाई आपका।
कसम से दीदी। बोलो। क्या बोलूं? रनित भाई बताओ, अब मैं जा सकता हूँ दीदी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल जा सकते हो। भारती भाई आप बिल्कुल जा सकते हो। आपका तबीयत कैसा है? तबीयत पहले से बहुत अच्छा है भाई, मैं 4-5 दिन से बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? ओके दीदी, बिल्कुल भाई, सो जाओ। अपना ख्याल रखना दीदी। मेरे साथ साथ आप भी अपना ख्याल रखना भाई। धमरात्रि दीदी। धमरात्रि भाई, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय भारती भाई, आप अपना ख्याल रखना। आप भी दीदी, आप मेरे पास में नहीं हो। क्यों भाई? रनित भाई ऐसा क्या है बताओ? बाय बाय भारती भाई, बाय बाय, आप अपना ख्याल रखना। दीदी कसम से क्यों टेंशन लेते हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ रनित भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टेंशन ना लो आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वहाँ हर दुख दूर होता है। बिल्कुल भाई, आप लोग का इतना प्यार दुलार सपोर्ट आशीर्वाद इतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आप सबका हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहूंगी कि आप जैसे भाई लोग कितना केयर करते हैं। आज के टाइम में लोग अपने नहीं करते हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइट बंद कर दो उसकी। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। और छोटा छोटा कमेंट करूं दीदी? मैं नहीं कर रही हूँ भाई, छोटी श्रेया है। अच्छा आप। थैंक यू सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स। सही में दीदी, आप यकीन नहीं करोगी दीदी, मैं पूरा नास्तिक हूँ। क्यों भाई, यकीन क्यों नहीं करूँगी? इससे बड़ा नहीं होगा कमेंट, क्योंकि यही सबसे बड़ा कमेंट है दीदी। अच्छा भाई, कोई बात नहीं है भारती भाई।
लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ एक बाबा हैं। बताओ भाई। जहाँ हर दुख दूर होता है। कहाँ पे बताओ। लेकिन आप कितना दूर हो। कौन सा बाबा है भाई बताओ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। दीदी मेरे पिताजी का दुख दूर हुआ है। दीदी बहुत अच्छी बात है भाई, आपके पिताजी सही सलामत हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। वो बाबा अब नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भारती भाई, ओके। अपना ख्याल रखना दीदी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप भी दीदी के साथ साथ आप भी अपना ख्याल रखना। धमरात्रि धमरात्रि भाई, धमरात्रि। गुड नाइट, जय भीम, नमो बुद्धाय, बाय भाई, बाय बाय। बाय बाय भारती भाई, थैंक यू। अपना ख्याल रखना। उन्होंने जीवित समाधि लिया है। अच्छा भैया, जो बाबा थे। ओके दीदी, बाय बाय, बाय बाय भारती भाई। थैंक यू सो मच। बाय भाई भारती भाई, बाय बाय। गद्दे की आवाज मुझे बचपन की याद दिला रही है। अच्छा भाई। दीदी बोलो भाई। घड़ी की आवाज मुझे बचपन की याद दिला रही है दीदी। अच्छा, घड़ी की आवाज आ रही है, टिक टिक की। बोला। घड़ी की आवाज आ रही है ना, टिक टिक। बोलो, क्या बोलूं भाई। कैसे। बताओ कैसे। बताओ भाई कैसे। मेरे बड़े पिताजी ने एक ऐसी ही घड़ी लाया था मेरे लिए। अच्छा भैया। जो इंडियन आर्मी में थे। अच्छा भाई, इंडियन आर्मी में थे। जब वो कश्मीर में थे। वहां से मेरे लिए लाए थे।
अच्छा, वहां से आपके लिए घड़ी लेके आए थे टिक टिक वाली। पहले की शौक, पहले की बचपना, पहले की हर एक चीज बहुत अलग ही है भारती। रणित भाई, पहले के सब अलग नहीं है, पहले का क्या था। रुको। बोलो भाई, रुके हूँ। जाने दो, क्या जाने दो। मेरा बात सुनो दीदी, बिल्कुल बोलो। आप बिल्कुल बोलो भाई, सुन रही हूँ आपकी बात। बोलो, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आपके लाइफ में मेरे सिवा कोई नहीं है, बोलो। बोलो रनीत भाई। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनो, बोलो। आप मेरे घर आओ। आपका घर कहाँ है भाई, कैसे आऊँ बताओ। बताओ आपके घर कैसे आऊँ कुछ दिन के लिए। मैं आपको वहां लेके जाता हूँ जहाँ वो बाबा का मंदिर है। अच्छा। कसम से दीदी, आप मेरा यकीन करो, वहाँ सब दुख दूर होता है। बोलो भाई, मैं सुन रही हूँ। सच यकीन कर रही हूँ, बताओ। मैं नहीं इन चीजों पर यकीन करता। बोलो। लेकिन मेरे पिताजी सही हुए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिसलिए आप हमेशा निराश रहते थे वो चीज़ आपकी संभव हो गई, मुझे भी बहुत खुशी है। उनके किडनी के पास दर्द होता था। अच्छा, अब वो ठीक है। अच्छी बात है भाई, ठीक हो गए। आप आओ। कैसे आऊं भाई, बताओ ना, कैसे आऊं। मैं पैसा देता हूँ, पैसे की बात नहीं मेरे भाई, कैसे आऊं आपको। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज। मैं अकेले थोड़ी आ पाऊंगी भाई, मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ, कैसे आऊंगी बताओ।
मैं वो चीज को समझ रही हूँ रनित भाई, प्लीज बोलो, प्लीज बोलूंगी यही। 10 मार्च के बाद, 11 मार्च के मेरे बेटे का लास्ट पेपर है, उसके बाद पड़ रही हैं छुट्टियां 20 दिन की। बताओ, एड्रेस देना तब आएंगे, हस्बैंड हम और बच्चे सब साथ में। सच बता रही हूँ, एड्रेस बताना तब सब लोग साथ में आएंगे 10 मार्च के बाद। दिल्ली? दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में कहाँ बताओ? रुको, बताओ। डिलीट कर दो, डिलीट कर दो नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके भाई, थैंक्स। हो गया, सब हो गया। ओके भाई, ओके भाई, ले लिया नंबर स्क्रीनशॉट, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ओके, डिलीट कर दो नंबर, बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक्स, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये वाले नंबर पर प्लीज। ओके भाई, ओके, मैं हस्बैंड से बात कराऊंगी। फिर मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रनित भाई, बिल्कुल। मुझे अब किसी से बात करनी है। ओके भाई, प्लीज मुझे इजाजत दो मेरी बहन, प्लीज। बिल्कुल भाई, आप जा सकते हो। जय भीम, बाय बाय भैया, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कर लो। अरे तकिया
उचाली से ऊपर रख के फ्रीज हो जाए। बाय भाई बाय, आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मैं कल उसके बारे में भी बताता हूँ दीदी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, थैंक्स सो मच। थैंक यू भाई। कि किससे बात करना जा रहा हूँ मैं आपके लिए, उसको रिप्लाई नहीं दिया। किससे बात करने जा रहे हो भाई? बोलो। मेरे साथ कम करती है एक लड़की है, मेरे साथ कम करती है दीदी। अच्छा भैया, आपके साथ काम करती हैं। उससे मैं बात करता हूँ। ओके भैया ओके। बस कल मुझे आप याद से कॉल करना, ठीक है भाई? ठीक है। प्लीज नहीं भाई, जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जरूर करेंगे भाई जरूर। 10 बजे ठीक है। ठीक है रनित भाई। फिर मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ दीदी। ओके भाई ओके। चल्लू है। कमेंट आ रहा है किसी का?
जय भीम नमो बुद्धाय। भैया कहाँ चले गए? मेरा फोन हैंग हो रहा था। पहले आजादी मिल गया दीदी, दूसरा आजादी अभी बाकी है। विजय भैया कहाँ गए? प्लीज आओ। सो जा बेटा। क्या है? सो जाओ। उल्टी करेंगे? चलो चलो बेटा बाबू।